Hello, dear students. I welcome you all. Today, I am going to give you a brief summary regarding the experiment in which we will reverse the speed of single-phase induction motor as well as three-phase induction motor uh, with the help of reversing switch. Along with, we will also use some contactors, okay, and push button switches. Now, the picture in front of you is basically a circuit diagram of single phase induction motor, जिसको अभी हमने practically दिखाना है आपको. And these are the these are the wires. This is first wire, and this is the second, this is the third, and this is fourth, and this is five, which are coming out from the induction motor. This is the main winding of induction motor. This is the starting winding of induction motor. This is capacitor of the value 100 microfarads, and it is centrifugal switch. Centrifugal switch works on the principle of centrifugal force. Okay, you might have heard. तो हमारे पास ये 5 वायर्स हैं जो कि मोटर से बाहर आ रहे हैं. तो हमारा जो कंट्रोल है वो इन्हीं 5 वायर्स पर है. They should be noted. That will be shown you after a few minutes. So this is our main component of this experiment. This is the reversing switch. It is having 6 terminals, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and it is shown as A, B, C, L. And what is this terminal? It is directly connected to B. So it is also a B terminal, and it is directly connected to A, and it is permanently connected to A. So it is also A. So it is permanently connected within the reversing switch. Now, this is moving contact. Okay, this is moving contact. इसको मैं green से या blue से denote करता हूँ. ये moving contact है. ये या तो यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे लग जाएगा. जब ये ऐसे लग जाएगा तो ये basically L को B से connect कर देगा. जब ये नीचे की तरफ होगा तो ये L को A से connect कर देगा. So in this way it reverses the connection of starting winding. हम बेसिकली स्टार्टिंग वाइंडिंग के ही कनेक्शन को रिवर्स करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर ही करंट कम होता है, एंड उसी वाइंडिंग को हम रिवर्स करना चाहेंगे जिस वाइंडिंग के अंदर करंट कम होगा. मेन वाइंडिंग बियर्स द मेन करंट ऑफ द इंडक्शन मोटर. क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, इसके अंदर हमेशा करंट रहना भी नहीं है, और ये थोड़ी देर के बाद अपने आप जो है हट जाना है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन. तो हमको करना क्या है, बेसिकली द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स बाय आइदर चेंजिंग द कनेक्शन ऑफ मेन वाइंडिंग और आइदर चेंजिंग द कनेक्शन ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग. सो इन दिस एक्सपेरिमेंट वी आर चेंजिंग द कनेक्शंस or terminals of the starting winding, because we have connected reversing switch to the because we have connected starting winding to the reversing switch. और ये जो मेन वाइंडिंग है इसको आप देख सकते हैं, it is directly connected to the supply mains with the help of these terminals, that is 1 and 5, and a voltmeter is connected to take the reading of voltage, which is basically voltage across the main winding, and an ammeter is also connected to measure main winding running current as well as the starting current. Starting current हमने एमीटर से लिया है, और मेन करंट जो है क्योंकि वो थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज वी आर रनिंग द मोटर एट नो लोड, सो इट इज बिलो 1 एम्पियर और अबाउट 1 एम्पियर, सो वी measure it with the help of contactor. Okay, this is our main switch and this is our supply main. So this is all about what the practical setup is on the paper that we will shortly show you on. We will work on this practical after a few minutes. Now let us talk about the circuit diagram of three-phase induction motor and how do we control it. So now you see, इसको आप देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं. Now you see, this is the circuit diagram for three-phase induction motor. This part is basically control logic. It is control logic, जहां पर हमने डिफरेंट कॉन्टैक्टर्स के नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कनेक्शंस दिखाए हैं.
Okay, this is control logic and this is actual induction, three phase induction motor, and these are two contactors. This is first, this is second. Now how do we reverse the direction of three phase induction motor? We can simply reverse the direction of three phase induction motor by simply changes any two phase terminals or any two phases, or if we interchange any two phases, then the direction of a three phase induction motor will be reversed. Now what the basic idea is, first this contactor works. Okay, it is for forward CF, it is written here CF. यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जब ये फॉरवर्ड रोटेशन में ये CF ऑपरेट हो जाएगा तो ये B यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा एंड दिस टर्मिनल विल बी टर्म्ड एज B. Y यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, दिस विल बी टर्म्ड एज Y एंड R विल बी कनेक्टेड ओवर हियर. ओके, तो B Y R ये इस तरीके से इनके फेज बनेंगे. हमने कंट्रोल लॉजिक इस तरीके से सेट किया है कि जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की कॉइल है ये नॉर्मली ये कैसी है, नॉर्मली सॉरी ये रिवर्स कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट्स हैं. ये जब कनेक्ट होंगे जब ये बेसिकली ओपन होगी, और इसके कॉन्टैक्टर्स उस वक्त कनेक्ट होंगे जब ये बेसिकली फॉरवर्ड वाली ओपन होगी. ठीक है, तो एक दूसरे का ओपन होना जरूरी है दोनों कॉन्टैक्टर्स के कनेक्ट होने के लिए. तो to ensure that there must not be any accident, because if any two line will be connected then there will be a short circuit. So to avoid short circuit we do such an arrangement. Okay, कि जब ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा उस वक्त ये ऑपरेट नहीं हो रहा होगा, और जिस वक्त ये ऑपरेट होगा उस वक्त ये ऑपरेट नहीं होगा. ओके, नाउ व्हाट इज द अरेंजमेंट? सिंपल अरेंजमेंट दिस. ये आप देख सकते हैं ये R है जो अभी यहाँ कनेक्ट हो गया था, लेकिन इसी R को एक कॉन्टैक्टर के थ्रू जो कि बेसिकली नॉर्मली ओपन है अभी, यहाँ के थ्रू यहाँ पर ले जाया और यहाँ पे कनेक्ट ना कर हमने कहाँ पर कनेक्ट किया, B को कनेक्ट किया. नाउ एट द टाइम व्हेन दिस कॉन्टैक्टर ऑपरेट्स, जब ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो ये जो R टर्मिनल है वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा. अब मैं रेड से बता देता हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली इस वाले टर्मिनल पर R आ जाएगा, अब B नहीं आएगा. और देखिए हमने जो Y था इसको हमने वापस Y में कनेक्ट किया, तो Y अपनी जगह रहेगा. देन B यहां से कनेक्ट होकर यहां पर आ गया, तो यहां पर, तो बेसिकली B और R को हमने इंटरचेंज कर दिया. बाय इंटरचेंजिंग दीस टू terminals, the speed of the induction motor or the direction of induction motor will be reversed. Okay, so this is I think this explanation is good enough for the purpose of understanding how do we actually change the speed or the direction of rotation of three phase induction motor. Okay, now we are going to show you it practically. Okay, उसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग. Thank you very much.